चलिए डिस्कस करते हैं। ईच ऑफ द आर्टिकुलेटर्स हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस ऑल वेरियस साउंड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो किस हिसाब से मीन्स हर एक आर्टिकुलेटर, राइट, यहाँ पे वैरायटी ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पहला चीज जो है वो बाइलेबियल कंसोनेंट्स है। सो बाइलेबियल का मतलब क्या होता है? बाइलेबियल का मतलब होता है जब मीन्स बाय का मतलब टू एंड लैबियल का मतलब लिप्स। सो जब टू लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप, राइट, व्हेन दे कनेक्ट टू ईच अदर, जब दोनों लिप मीन्स टच करते हैं, सो उसके बेस पे जो साउंड आता है तो उसको आप क्या कहते हो? बाइलेबियल कंसोनेंट्स कहते हो। तो उससे क्या क्या साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं? जैसे कि प, प, ब, म एंड डब्ल्यू, राइट। सो प, ब, म, डब्ल्यू। सो ये जो चार लेटर हैं, ये चारों लेटर प्रोड्यूस होते हैं, तो जिसको हम बाइलेबियल कंसोनेंट्स साउंड्स कहते हैं। ठीक है। तो जिस हिसाब से लिखा गया है स्लास दे के, तो उसी हिसाब से आपको हर एक लेटर के बाद मीन्स स्लास दे के लिखना है, राइट। पी, प, ब, म, डब्ल्यू। सो उस हिसाब से सेकंड में क्या ना, लैबियोडेंटल कंसोनेंट्स। सो लैबियोडेंटल कंसोनेंट्स क्या होता है? सो लैबियो का मतलब हमें पता है कि लिप्स को रेफर कर रहा है, वेराज डेंटल का मतलब टीथ को रेफर करता है। तो लिप्स एंड टीथ, सो ये दोनों जब टच होते हैं, सो तब आपको जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको आप कहते हो लैबियोडेंटल। जैसे कि अपर टिथ, जो आपका अपर का टिथ है उसके साथ जब लोअर लिप टच होता है, जैसे कि आप कहते हो ब, 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 फ, फ, ब, फ, so that produces the sounds called as a labiodental consonants. Okay, then the third one is called as a dental consonants. So dental consonants क्या होता है? That's called as a teeth. Dental का मतलब पता है, टेथ, टंग एंड टेथ। टंग एंड टेथ का जो टच होता है और कनेक्शन होता है, जो जिसके बेस पे चार अदर साउंड्स भी आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो ट, ड, त एंड द, त, ड, त एंड द, राइट। सो you can check it like touch your tongue with the upper teeth, right? So touch your tongue with the upper teeth. So that's called as a the, and the and the. Or you can say that the tip of the tongue touch to the upper teeth is called as a dental consonant sounds. Similar to that, the fourth one is called as a alveolar consonants. So alveolar consonants यहाँ पे क्या है ना, tongue and alveolar ridge. So जब आपका साउंड्स आता है स, स, ज, z and t, d, n, r and l, right? So you can say that sa, z, t, d, n, r, l are produced when the tip of the tongue touches the alveolar ridge. So तभी आप कह सकते हो कि ये एक alveolar consonants है, right? So please do remember कि कौन से लेटर कौन से साउंड्स में आते हैं, right? So palatal consonants क्या होता है ना? palatal consonants, palate का मतलब क्या होता है? that called as जो अपर पार्ट का जो हार्ड सब्सटेंस है उसको आप पैलेटल कंसोनेंट्स कहते हो। अल्वियोलर रीच किसको कहा जाता है कि मीन्स वही अपर टीथ के मीन्स ऊपर जाके अगर देखा जाए तो वो उसको आप अल्वियोलर रीच कहते हो, रीच, राइट। सो वहां पे आपका अगर टंग, टिप ऑफ द टंग टच करता है तो उसको आप क्या कहते हो? अल्वियोलर रिज कहते हो। जैसे कि स, 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 और स, सी, और ग, 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 ग। So and t, t, d, right, n and r and l. So these are produced when the tip of the tongue touches the teeth. So
पैलेटल कंसोनेंट्स किसको कहा जाता है? सो द साउंड्स ज, राइट? सो और यू कैन से दैट ग ऑल्सो इसको कहा जाता है पैलेटल. पैलेटल मीन्स पैलेट. The hard palate of the upper part is called as a palatal. Palatal consonants. So, जब आपका टंग टच करता है पैलेट को तो उस टाइप के साउंड को आप ग कहते हो. और ज भी कहा जाता है. एक होता है जी, जेट, जी, एंड अनदर is called as a j, right? Z and j. These sounds are called as a j, are produced when the blade of the tongue touches the hard palate. Like you can say jug, J-U-G, jug. G is different, J is different, and Z is different. Z produce alveolar consonants, J produce palatal consonants, and G is called as a glottal consonants, right? So उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो these j sound are produced when you use the palatal consonants. Next one is called as a glottal consonant. So glottal consonant में जहाँ पे आपका tongue and velum soft part of the palate. So हमें पता है soft part of the palate कहाँ पे है. So hard palate के अंदर अगर जाए तो हमें soft palate मिलता है. So जब आपका means g and k, right, reduce होता है, you can feel that जब आपका tongue, right, back of the tongue touches the soft part of that, it's called as a means glottal consonants. So उसको कौन से साउंड्स लेटर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ग एंड क. ग क, ग क. Like you can say that gate, 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 or kite, kite, right? Kite. So in that case, g and k comes as a touching of the means back of the tongue with the soft palate. It's called as a glottal consonants. Now, moving to the next one. So अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट कंसोनेंट्स मिले जिसमें आपको मीन्स अगर देखा जाए कितने साउंड्स मिले? प, ब, म, डब्ल्यू, भ, फ, 8, 6, then t, d, t, d. So that's again called as a 10. Then 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sir, z, t, d, d, n, r. Right? So, and also j and g and k. So उस हिसाब से देखा जाए l is also there, right? 7, 18, 19, 20. So 20 consonants यहाँ पे मिले. Now, now moving to the IPA 44 sounds, consonant sounds, plosives. So you understood आपका क्या क्या रहा? Bilabial, labiodental, then after dental, then alveolar, palatal, and glottal, right? These are the consonant sounds. These are called as a consonant sounds. तो चलते हैं प्लॉसिप्स. सो जैसे हमें पता है कि प्लॉसिप्स 6 साउंड्स है, फ्रिकेटिव्स 9 साउंड्स है, अफ्रिकेट्स 2, नाजल 3, सेमी वावल्स 3 एंड लेटरल 1. तो प्लॉसिप्स में क्या पॉइंट आउट होता है? प्लॉसिप्स का मतलब क्या है ना? अगर हम प्लॉसिप्स के बारे में डिस्कस करें तो ये क्रैकर्स का जो साउंड होता है, एक्सप्लोड का जो मीनिंग होता है, एक्सप्लोसिव का जो मीनिंग होता है, एक्सप्लोजन का मतलब जो होता है, तो उसी को प्लोसिव्स कहा जाता है. जैसे कि इफ यू से मिनी एक्सप्लोजन इन द माउथ, मतलब मुंह से जो फट से जो वर्ड आता है, जो साउंड इमीडिएटली आता है, उसको प्लोसिव्स कहा जाता है, राइट? सो यहाँ पे 6 साउंड्स होते हैं प्लोसिव्स में. सो ये जो 6 साउंड्स होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया. ये 6 प्लस प्लोसिव साउंड्स को डिवाइड किया गया है मीन्स कितने में? मीन्स 3 में, 3 and 3. और ये जो 3 है इनको कहा जाता है 3 आर एस्पिरेटेड साउंड एंड 3 आर नॉन एस्पिरेटेड साउंड. सो आपको ऐसे याद रखना है कि प्लोसिव साउंड्स आर
divided into two. Plosives are aspirated and non-aspirated. So aspirated plosives का मतलब क्या होता है कि जहां पे मीन्स आपका एयर बाहर आता है, a puff of air is released during the articulation of these sounds. The aspirated plosives are p. So जब आप p यूज करते हो तो आपके मुंह से जो मीन्स एयर आता है, इमीडिएट एयर आता है, तो उसको एस्पिरेटेड कहा जाता है. ठ, प, ठ, ख, right? P, t, k. These are called as aspirated plosives, right? Non-aspirated क्या होता है ना, जहां पे no puff of air is released, मतलब कुछ एयर आता नहीं. ब, ब, ड, ग, ब, ड, ग. So these are called as a non-aspirated. So you have to remember like what pataka and badaga. Pataka is a plosives aspirated, badaga is plosive non-aspirated. ठीक है. चलिए, लेकिन ये कंसोनेंट्स हैं, ठीक है, इस हिसाब से आपको याद रखना है. ओके, नाउ ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ओके, now plosive sounds aspirated and non-aspirated, pataka and badaga. So you can say the examples are some examples are pointed here. Like you can find out per, punctual, leopard, gallop, right? So you may get the example like punctual, right? Uh, किस टाइप का साउंड्स यहाँ पे है. So you need to write plosive sounds aspirated, right? Leopard. So per is given. So plosive sounds aspirated. Gallop, right? Gallop. So in that case, per sound is produced, and that indicate the aspirated plosives. So similar to that, teeth, teeth. So bottom, button, bullet. So pataka, badaga. So we know that teeth, button, bullet. So in this case, you will find out it's also plosives and aspirated. Christmas, trickle, ballistic is also called as a means plosive aspirated. So non-aspirated are called as a badaga, Byzantine, bubbles. So where you will find out b sound is produced, right, and stressed also. The sound is also produced and identified also. Means you can see that the stress is presented. Dance, grandeur, cascade. So these are called as means non-aspirated plosives. Now, you will also find out grudge, vagabond, loc. So is also known as a plosives as non-aspirated. Per divide, okay, no issue. There are lots of examples are pointed. Now, let's move to the next one. That's something called as a voiced and voiceless, right? तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत टाइप के आ सकते हैं, जैसे कि voiced क्या है, voiceless क्या है, plosives क्या है, और aspirated, non-aspirated. Means P is the sound of, P is what kind of a sound, G is what kind of a consonants, right? So in that case, you have to remember that. G is indicating as a glottal. So P is indicating as a means of plosives, affricative, right? So next is called as a voiced and voiceless. So voiced and voiceless sound. While articulating the P sound, place your hand in your throat. You would feel no vibration. So like affricative, affricate, and also aspirated and non-aspirated में क्या होता था,
एस्पिरेटेड में एयर आते थे एंड नॉन एस्पिरेटेड में एयर नहीं आते थे, राइट। तो यहाँ पे वॉइस्ड एंड वॉइसलेस में क्या होता है ना, आपका मीन्स यू विल फाइंड आउट दैट वेदर देयर इज अ वाइब्रेशन और नॉट। अगर वाइब्रेशन होता है तो इसका मतलब वो वॉइस्ड है, अगर वाइब्रेशन नहीं होता है तो उसको वॉइसलेस कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, it comes like a fricatives. So fricatives क्या है ना, fricatives are produced when the two parts of the mouth force air through a small space, therefore creating audible friction. We have 9 sounds classified in the category. तो आपको मीन्स एस्पिरेटेड नॉन एस्पिरेटेड प्लोसिव्स में, एस्पिरेटेड नॉन एस्पिरेटेड में 6 साउंड मिल गए, राइट। तो अभी मीन्स आपको यहाँ पे फ्रिकेटिव्स में कितने साउंड्स मिलेंगे, 9 साउंड्स। देखते हैं क्या क्या 9 साउंड्स होता है। सो ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, सो let's see that. Um, Again, you would find out fish, fur sound, fur. 5 foreigners left to the famous Filipino fantasy park. If you want to uh, find out the fur sound properly, where the upper teeth is touching to the lower lips. So fur, burr, then the. So means the tip of the tongue touch to the upper teeth. Then after the, thereafter, then sir, sure, right? So these are the things. Then Z, right? Z, G sound, um, Z sound, like you can say pleasure, seizure, closer. The so you would find out that produce the Z sound, Z. So and another one is called as a means zebra, gazelle, praise, right? So and another is called as a her sound, hilarious, historical, Stockholm, right? So these are the sounds which are also known as a fricative sounds, right? Fricatives which are voiced and voiceless, right? So अगर देखा जाए यहाँ पे जो दिया गया है फ व त द स श, then after you would find out means z, then after like you say pleasure, Caesar, closure, luxurious, then um, Z is also there, that's called as a zebra, gazelle, praise, hilarious, historical. So these are the Z sounds. C or the sounds exercise, like we say bass and bathe, breeze, breathe. So it's called as a difference of the and the sound. Okay, now fricatives, you find out 9 fricative sounds. What are those 9 fricative sounds? P, B, T, D, S, Sh. Then after you can say that Z, 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 J, Z, and H. Right? These are the noun 9 fricative sounds, which are also known by
voiced and voiceless. Now, let's move to the next one that's called as affricate. So how many means fricative sounds you have? You can say that 9 fricative sounds are there. How many affricate sounds are there? Means affricate sounds generally connected with the combination of plosives and fricatives. Combinations of plosives and fricatives. We have 2 sounds classified under this category. So फ्रिकेटिव्स में अगर 9 साउंड्स होते हैं, अफ्रिकेट्स में 2 साउंड्स होते हैं. ठीक है. सो ये 2 साउंड क्या होता है? एक होता है च एंड अनदर व्हाट इज कॉल्ड एज ज, राइट? लाइक ch and j, like you can say gigantic, or we also sometimes say that gorgeous, or called as a marriage, right? Gina dressed like a gentle giraffe ginger, right? So in that case, you can find out Judge, Sanjay, Jason, Joshua, and Josie. So J and Ch are called as 2 affricative sounds, right? Okay. Next is called as, so you find out what? Means you find out plosives. Under the plosives, aspirated, non-aspirated. Second is called as fricatives, 9, and affricative, 2. Then nasals. How many nasals are there? 3 nasal sounds are there. So what are those 3 nasal sounds? 3 nasal sounds are called as means m, n, n. Right? M, n, right? So m is called as a m, n is called as a n, and is called as a ng, right? Ing sound, ing sound. So like you can say mystical, humble, or humble, aquarium. So m sound. And n is called as a notorious, lunatic, and valentine. So they are known as a what kind of a sound? They are also known as a means nasal sounds, because it produces the sounds through the nose. So नाक के जरिए जो साउंड होता है, तो आपका मुंह तो खुला रहता है, और मुंह बंद रहे या खुला रहे कोई परवाह नहीं है, but means it produce the sounds called as a ma, ma, ma. So you the sound is, or the air is coming not through mouth but through nose. Ma, then after na, then after means ing, or called as a right? That is what it's called as a nasal sounds. So apart from this, you also find out the next one that called as a semi-vowel, right? जैसे मैंने आपका म से मिस्टिकल, फंबल, एक्वेरियम, हम्बल कहा, सो न से नोटोरियस, लुनाटिक एंड वैलेंटाइन भी होता है, और से स्टिंग, ब्लेरिंग, triangle. So these are the things. Okay, semi-vowels. So what do you find out in semi-vowels? In semi-vowels, you will find out y, y, y sound, y, yan, youngster, or kayak. So the letter would be like J, right? Letter would be like J sound. So you can see that J sound. So young, younger, youngster, and kayak. So similar to that, if you talk about another semi-vowel, so you would find out W sound, right? So generally we call it as a w, winter, right? Winter, or you say wailing,